Hello student, now in this video we will discuss next question 8. In the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस में मेटल्स जो है वो प्योर मेटल या इम्प्योर मेटल जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड एंड कैथोड का यूज़ होता है, जिसमें कि मेटल्स का जो प्योर फॉर्म है एंड इम्प्योर फॉर्म उससे सेपरेट किया जाता है. सो आंसर इज in anode impure metal, cathode pure metal and electrolyte aqueous solution of a salt of the metal. In cathode, anode cathode and electrolytes में impure metal, pure metal and aqueous solution of salt of the metal ये हमें extract मिलते हैं. Question 9. Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below. So A. What will be the action of gas on first dry litmus paper? So answer is no effect on dry litmus paper. सेकेंड क्वेश्चन, मॉइस्ट लिटमस पेपर, क्या इफेक्ट होता है मॉइस्ट लिटमस पेपर पे? द आंसर इज मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड बिकॉज द कलेक्टेड गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड विच फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर. B. Write a balanced chemical equation for the reaction taking place. So here the chemical reaction, moist blue litmus paper turns red because the collected gas is sulfuric dioxide. सल्फर गैस, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने पे सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जो कि मॉइस्ट लिटमस पेपर को किसमें रेड कलर से जो है ब्लू कलर का लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है. एंड यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. और हमने एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर पे कन्वर्ट कर देता है. क्वेश्चन 10. स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. सो आंसर इज फर्स्ट मेथड इज galvanization. This method is plating of zinc metal on the iron, and second method is electroplating. In this method, plating of chromium metal on the iron by the process of electroplating. Now question 11. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? So answer is when non-metals combine with oxygen, they form usually acidic, while some oxides or some metals are neutral. So जब non-metals जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, so वो बेसिकली एसिडिक जो ऑक्साइड जो है वो non-metals के ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं. क्वेश्चन 12. गिव रीज़न. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. So answer is platinum, gold and silver are least reactive and highly lustrous, and then corrosion do not take place, therefore these are used to make jewelry. B. Sodium, potassium and lithium are stored under oil because answer is sodium, potassium and litmus are highly reactive, even they can react the moisture present in air, therefore these are kept or stored under oils. C. Aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensil for cooking. Answer is aluminium is good conductor of heat and have a high melting point. It does not react even with boiling water and with weak acid. It is reactive with alkalis which are not used in cooling
of food. Therefore, in spite of being highly reactive, it is used to making cooking utensils. And D. Carbonates and sulfides or rays are usually converted into oxides during the process of extraction. The answer is, in the process of extraction of metals, it is easier to obtain a metal from its oxides as compared to carbonate and sulfide or rays. Therefore, prior to reduction, the carbonate and sulfides or rays must be converted into its oxides.